अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे आए टॉपिक की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन दैट द रेट द चेंज of current in a coil will causes induced EMF in a coil itself. Such is known as self inductance. इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम E of S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E of S is equal to minus n number of turns into I divided by delta t, delta pi or delta t, and we know that delta pi is equal to I, and we know that here phi is phi is directly proportional to I। करंट चूँकि चेंज हो रहा है, करंट के चेंज होने से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो पाई इज इक्वल टू के इंटू आई। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, E of E is equal to self inductance is equal to minus n k n I over delta t, where kn is constant, non a is and is equal to L, which is equal to self inductance, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल है। देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I और डेल्टा T। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जो है ना बेसिक इक्वेशन है। इक्वेशन 3 इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस वेयर एल की वैल्यू अगर हम अलग कर लेते हैं तो ये हो गए E और डेल्टा I और डेल्टा T। इसी तरह इंडक्टेंस का जो यूनिट है इट्स यूनिट इज हेनरी, इज नॉन एज हेनरी। Respected all, thank you so much for watching this। ये था हमारे साथ सेल्फ इंडक्टेंस। होपफुली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।